हाय गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है एमडी इंडियन हैकर। गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके वीडियो के नीचे एग्जैक्टली ऐसा रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करें और इसे बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन है, मतलब हम जो नई वीडियो अपलोड करते हैं, मतलब कोई भी हम इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते हैं उसकी जो नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पर जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों, हम जो है हर 2 दिन में वीडियो बनाते हैं और 2 दिन पर बाद छोड़ते थे। तो चलिए दोस्तों, आज जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो है ऐसा एरोप्लेन अपने बचपन में उड़ाया होगा। आप देख सकते हो ये एरोप्लेन, ऐसा एरोप्लेन गाइस आपने बचपन में उड़ाया होगा। हम जो है इतना नहीं गाइस, इतना नहीं। तो गाइस, ये जो मैं दिख रहा हूँ आपको, मेरे से भी बड़ा एरोप्लेन हम बनाने वाले हैं। दोस्तों याद रखना, हम जो है इतना बड़ा एरोप्लेन आज बनाने वाले हैं। ये कोई भी फेक वीडियो नहीं दोस्तों, आप आगे भी स्किप करके देख सकते हो, पर स्किप करने के बाद फिर से वीडियो फिर से पॉज करके फिर से लगाना दोस्तों, क्योंकि स्किप करने से वीडियो में आप दिया गया कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज जो है हम बनाते हैं कुछ बड़ा सा एरोप्लेन। तो चलिए दोस्तों, मैं उसकी बताने की आपको सामग्री बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, आपने भी देखा होगा मैंने ये कितना बड़ा बॉक्स लाया है। चलिए दोस्तों, हम जो है अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये स्टेज से बाहर ये वीडियो आपको बनाने वाला हूँ। तो हम जो है स्टार्टिंग में ये जो आपको क्लिप दिख रहे हैं ये दोस्तों खोलेंगे और ये बॉक्स बिल्कुल कागज की तरह कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये क्लिप उससे पहले दोस्तों ये कचरा हम निकाल लेते हैं थर्माकोल। तो दोस्तों, हम जो है इस फ्रिज के बॉक्स से क्लिप निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो पॉज नहीं करता, आपको भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों चलिए हम खोलते हैं इसके क्लिप्स। चलिए दोस्तों, हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम इसकी कटिंग करेंगे। हम पहले इससे उसका जो है माप सब ले लेंगे। दोस्तों, हमको जो है इसके तरह ऐसे आप इसको कटिंग करना है, मतलब इसकी तरह नहीं, मतलब ये जो है सीधा हमको ऐसे कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों, आपको जो है ऐसे ये जो है ऐसा आपको एक कटिंग कर लेना है, मतलब हम कटिंग करेंगे। और उसका जो यहाँ पर एक ऐसा ट्राउजर रहता है, छोटा एरोप्लेन, ये जो छोटा एरोप्लेन का जो है ऐसा ये ट्राउजर रहता है, ये भी हम चिपकाएंगे। दोस्तों, ये हम ऐसा नहीं बनाएंगे, ये ऐसा चिपका के फिर इसे उड़ाएंगे। चलिए दोस्तों, ऐसा हम ट्राउजर तैयार करते हैं इसके माप के साथ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसके जैसा हमने एक ट्राउजर आप देख सकते हो, इसके जैसा है हमने ये ट्राउजर बना दिया है, मतलब ये इसके ऊपर लगेगा यहाँ पर। चलिए दोस्तों, हम जो है इसकी बड़ी कटिंग करते हैं। तो करते हैं इसकी हम कटिंग। दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा होने वाला है, आप वीडियो को पूरा देखिए, बीच में से आगे मत ढकलिएगा, मतलब स्किप मत करिएगा, आपको कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आएगा स्किप करने से। दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं।
see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow through the sun rays, and we'll go through the wastelands, through the highways, and we'll go. तुमचं कसं होईल पण माझ्या एकच होती हे लोक बघायला आले का मग कसं लँड होत काय चल पहाडावर घेऊन ऐक पहाडावर ना पडे ही तो व्हायची काय तो दोस्तों हम जो है अपनी मंजिल पर आ चुके हैं। चलिए दोस्तों ऊपर चलते हैं। दोस्तों ये कितना ऊपर है, वहाँ से हम जो है एरोप्लेन फेंकेंगे। हम जो है पहाड़ में यहाँ आगे, जरा कैमरा उधर घुमाना। देखिए दोस्तों ये बहुत ऊपर है। हम जो है इस पर से ये जो हमारा एरोप्लेन है वो उड़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम जो है अपना एरोप्लेन छोड़ते हैं। अरे असं कुठं सोडतो क्रैश हो गया हमारा तो दोस्तों आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। फ्रेंड्स हमने जो है बहुत ही दूर जाकर ये एरोप्लेन है ऊपर से फेंका था, पर वो जो है ज़्यादा पर वो जो है उसकी जो पैनल टेढ़े हो चुके थे, इसलिए वो उड़ा नहीं। दोस्तों हम जो एरोप्लेन वहाँ से हमारे घर से यहाँ तक लाए थे, तभी उसका पैनल थोड़ा सा ख़राब हो चुका था, इसलिए वो उड़ नहीं सकता था। तो फ्रेंड्स अगली बार हम इसके पैनल ठीक करेंगे और उड़ाएंगे। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना हमारा चैनल और बेल आइकन पर भी क्लिक करना, ताकि हमारे जो लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए।